Hello, Namaskar, good evening, and a very warm welcome to all our viewers in this particular conversation. I'm Simran Singh, and you are watching this particular session on PME Vidya channel number 6 to 12. Well, we have our different mediums through which you all can be a part of our session. You can participate in the sessions, and also you can ask your questions, your queries in the live session. That is through our YouTube channel. You all know it is NCRE official. So it's around 4 p.m. on your watch, and regularly from 4 till 5 p.m. we come up with special sessions for all our viewers. So once again, allow me to welcome you in this special series running on Cyber Jagrookta Diwas. As you all know, and it has been informed several times to all our viewers, that the Ministry of Home Affairs is implementing a scheme that is called the Indian Cybercrime Coordination Center to deal with cybercrimes in a coordinated and comprehensive manner. And in the month of October, CIET NCRE is conducting 3 technical sessions in collaboration with I4C, Ministry of Home Affairs. So let me also provide you a brief of these 3 training sessions that we are going to conduct. So today is day 1, and the topic that we are going to discuss today is malware prevention. Then for day 2, that will be our technical session on 14th October 2022. We'll elaborate more on online financial safety. And on the 3rd and the concluding day of the session, that is on 21st of October, we'll discuss more on device security. So throughout this live interactive session, that is for 1 hour, if you have any queries, any feedback regarding our today's topic, regarding the context, so feel free to write down to us in the comment section of NCRE official. Besides, here is a contact number that is also flashing on your screens. So feel free to give us a call at 8800440559, and also specific mail IDs flashing on your screen. Kindly note it down. It is cybersafety@ciet.nic.in. So I am also delighted to inform you that in the conversation we are joined by 2 esteemed panelists who will discuss and elaborate more on today's topic. So allow me to introduce them with all our viewers. Here we have with us Mr. Gautam Kumar sir. Namaskar sir. Good evening. Good evening. A very warm welcome in the session. Sir is a Deputy Commandant from UPSC 2011 batch, CAPF officer. He is presently working with the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. Let me also take you across his journey. He did his engineering from NIT Nagpur. He has also worked with Invoices and Income Tax Department, Central Board of Direct Taxes. Further, he is associated with I4C, that is Ministry of Home Affairs, for more than 3 years, and is also assisting various law enforcement agencies of states, union territories in dealing with issues that are related to cybercrime. So a very warm welcome in the session, and we are honored to have you here in the conversation with us. Thank you, ma'am. Thank you so much. Then I am happy to inform our viewers that we also have another panelist in the conversation, Dr. D3pak Kumar. Namaskar, sir. आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस सत्र में. He is currently serving as Senior Consultant I4C from Ministry of Home Affairs. Sir is Senior Digital Forensic and Cyber Intelligence Professional in India. He has been working on several consulting and investigating engagements with organizations such as corporates, national and international law enforcement organizations, government sectors, and public sector undertakings. Also, he is presently engaged with projects related to cyber threat intelligence, security operations center, and capacity building in the area of cybercrime and digital forensics domains. We welcome you with open arms in the conversation. So all the viewers who have connected with us in this particular interaction, you all know the different mediums through which you can connect with us. And if you come up with your queries, and if you are left by time in the conversation, we'll try to take all your queries towards the later segment of this session. So let's begin this session on malware prevention. In the first place, I'll request Mr. Gautam Kumar sir to apprise our viewers and lay a strong foundation of this session regarding the topic, that is malware prevention. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everyone. I would like to thank CIT and NCRT for arranging these type of sessions, and I would like to extend my happiness for that, because we are celebrating the first anniversary of the Cyber Jagrookta Diwas. So not only the ministry, and there are the other state law enforcement agencies, and at the district level and at the village level also they are celebrating this Cyber Jagrookta Diwas. And this is really happy for me to say from this platform that not only the CIT, which is spreading more awareness about the cyber Jagrookta,
but it is also the teachers and the students who are also being part of this are also spreading the cyber awareness. So in particular, that I would like to say that the whole ecosystem has been formed for spreading the cyber hygiene. So in view of that, we are discussing about the malware prevention. Previously, myself and Mr. Deepak, we had come here together for discussing about other issues which are related to cyber financial frauds or cyber crimes. So this is one of the hot topic these days, that malware prevention. So I would like to show some data also. What exactly that malware is, I'll come to that later. So you can see the data where there is a lot of breaches that has happened in 2021 and still it is going on. So you can see the big basket data that is available, and you can see that in the data there has been data breaches have happened in 2021. So why this happened? So there is a question that this data came out from where? So that is the whole topic we are going to discuss today. So as a basic level, I should say that malware is one of the part that is responsible for this type of data to come in. So what exactly is malware? So it is nothing but just we can say it is a small, you can this thing, right? So malware exactly it is a small software, as a sort of software that gives a person for unauthorized access into a system, which he can modify, he can destroy, or he can add certain things into the system. So that is the software that is exactly the malware. So you can see the the presentation on the desktop, which is showing the different type of malware that we can call it as a ransomware, we can call it as a backdoors, or we can call it as a Trojan. These are the types of malwares we should like we come to day-to-day notice. So what exactly is ransomware? What is cryptojacking? What is Trojan? This everything has a common entity. Let's say that there is a small exe file or a software that get inserted into the system, which get the access, which is unauthorized access to the fraudster. So he has the system which he can modify. He want to get access of all the data of that system by asking any ransom, or he can use it some other fraudulent activities. So that exactly is malware. So coming to that, there is the only point where we have to come across like how to prevent this, how to prevent this malware to come into our system, or to attack any organization, or to attack any institution. So these are the attack vectors. So you can see we can say that social media is one of the platform where a number of users get connected. So from there, the chance of getting malware into the system or the mobile is very common. Other than that, there are messages. Instant internet messages are also available. Either you can go it as their emails. If you say some of the company, some of the applications which can give advertisements, which has some links or the phishing emails or the phishing URLs, which can be a sort of malware. So these are the things that to be kept in mind, that whenever you are having access to any link or installing any application, you have to look after the malware that is available there or not. So we come into the technical part again. So how to look for the malware that is present in the system, present in the link or not, or these are the cyber attack goals. So why the main purpose of the attack, we can segregate into three parts, like that can be done for money or power or the revenge, or for learning purpose also, or for an espionage purpose. So these are the part the fraudster or the hacker looks for the malware attack. And you can see the attacker's profile. So maybe that will be a activist or an organized gang or any state-sponsored groups also. So these are the part of the attackers. And what are the targets? I can say that nowadays the cybercrime is spread everywhere. So we can't segregate whether it is only limited to the women or the children. No, it is limited to everywhere. So may you call it as a corporate, you call it as an individual, you call it as any infrastructure that is very critical to the nation, or you may call it as for the government. So these are the targets that are being looked after by the groups
where the goal is for only the money or power. Not only that, it is also for the espionage. The main part comes that as a national security, that is the espionage part, where there is confidential data that cannot be stolen, that cannot be stolen. So the malware that acts, if it is into a system of a critical infrastructure, so the sensitive data will be transferred out. So we have to take care about the malware prevention. So there comes the whole topic, like how to prevent the malwares. Next, please. So I would like to introduce my friend Deepak. He will say about the attacks methods and what are the precautions to be taken care. Hello everyone. So the important point which I would like to draw attention in this area, like malware, which already covered by him in a very clear manner, like any malicious code, any malicious software application generally which comes in any computer, any system, any mobile, any platform where it create anything. So that is a main perspective. But the question here is like how these malwares comes in computers or in your device. So initially we have various methods. So few of the methods which I have covered in this presentation, like you can see, the first one is like exploiting the vulnerability, the weakness in the computers, in the software, the application basically, where these hackers, these threat actors, or any criminal or any fraudster basically they try to do what वो हमेशा कोशिश करते हैं कि vulnerability find करके अटैक करने के लिए, और अक्सर एडवाइजरी निकलती है कि कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐसा डिवाइस है बेसिकली उस पे अगर कोई vulnerability उसे पैच कीजिए, अपडेट कीजिए, वो पैच नहीं होता, अपडेट नहीं होता, तो अटैकर्स उस vulnerability का मिसयूज करके सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं. दूसरा जो मेजर पॉइंट है दैट इज अबाउट द फिशिंग ईमेल्स. फिशिंग एक बहुत कॉमन टैक्टिक्स है जहां पर कोई क्राफ्टेड मैलिशियस ईमेल भेज करके उसमें कोई अटैचमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा लिंक, हाइपर लिंक जो बेसिकली किसी गलत जगह पर या किसी मैलिशियस डोमेन पे या सस्पिशियस एंगल पे लिंक करके आपसे कोई कंटेंट डाउनलोड या कंटेंट लिंक करने की कोशिश कर सकता है. सो दैट इज द फिशिंग टैक्टिक जनरली व्हिच इज देयर. Similarly, we do have malicious updates and installers. Like आपने सोचा होगा कि fake applications, fake updates भी आते हैं. आपने मोबाइल में काफी देखा होगा ऐसे एड्स आते हैं जहाँ पर आता है कि आपके मोबाइल पे इतने एंटीवायरस, इतने वायरसेस फाइंड हुए हैं और बेसिकली एंटीवायरस से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं. तो ऐसे फेक एप्लीकेशंस, फेक एंटीवायरसेस भी आते हैं, फेक अपडेट्स भी हैं. दैट इज द malicious thing which is there. Similarly, stolen reused credentials जो आप देख सकते हैं कि डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर फोरम्स हैं जहां पर आपकी क्रेडेंशियल्स या यूजर्स की चीजें अक्सर मिलती रहती हैं कि ये डेटा लीक हुआ या ब्रीच हुआ. सो दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज देयर. malicious links in chat. malicious link in chat is basically like you can say कि किसी यूजर से किसी व्यक्ति को किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई फिशिंग यूआरएल, फिशिंग लिंक किसी चैट पे भेजा गया, जैसे व्हाट्सएप पे आप देखते हैं अक्सर ऐसे मैसेजेस आते हैं, एसएमएस पे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो जिसपे कोई लिंक्स ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए बिटली है या कटली, इस तरह के शॉर्ट लिंक यूआरएल्स होते हैं जो बेसिकली मैलिशियस लिंक कंटेन की रहती हैं. सो दैट इज आल्सो देयर. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैलिशियस लिंक्स इन देयर. एक्सप्लॉइट किट की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा एक गंभीर जीरो डे कह सकते हैं प्रकार से. ऐसे स्क्रिप्ट बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम पे रन कर जाना, रिमोट एक्सप्लॉइट कह सकते हैं आप. ये बेसिकली किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी फंडामेंटल पर्सपेक्टिव समझा जाए तो किसी अटैचमेंट में ऐसे किट्स, ऐसे मैलिशियस कोड इंजेक्ट करना ताकि रिमोटली उनके एंटीवायरसेस या उनके जो ईडीआर सॉल्यूशंस हैं, एचडीआर, वो प्रॉपर्ली उनको काउंटर ना कर पाए, वो कंटेंट उनके सिस्टम पे चला जाए. तो ये कुछ एडवांस फंडामेंटल लेवल की चीजें जहां पर मैलिशियस लेवल पे ऐसे मैलवेयर्स आते हैं. हार्डवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, डिवाइसेस हो गई, वेब सर्विसेज हो गए, फिजिकल साइट भी कह सकते हैं, ईमेल्स भी कुछ ऐसे मैथड हैं जनरली जहां पर इस तरह के अटैक्स इनिशिएट होते हैं. अक्सर कहा जाता है कि जब इस तरह के इंपैक्ट हो जाते हैं तो ये मैलवेयर कर क्या सकते हैं, ये सिस्टम पे एक्सेस ले सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं और इंपर्सनेशन जैसी चीजें इनिशिएट कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन जिसको डेटा एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, डिलीट करना कंटेंट को, चेंज करना, मॉडिफाई करना. जो परमिशंस होती हैं आप अक्सर देखते हैं मोबाइल जैसे परमिशंस आती है जहां पर कंटेंट को लोग डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सीएनसी कमांड कंट्रोल जैसी सीटू जैसी चीज क्रिएट करके रिमोटली आपके कंटेंट को ले जा सकते हैं. और कंटेंट ऐसे होते हैं आपकी पीपीटी फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स जो पीपीटी, पीडीएफ, डीओसी, डीओसीएक्स, एक्सएलएस, आरटीएफ, इस तरह के इमेजेस, इस तरह के डॉक्यूमेंट फाइल वो साइलेंटली आपके सिस्टम से एक्सफिल्ट्रेट कर सकते हैं. और भी कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे आपने नोटिस किया है कि टॉरेंट जैसी चीजें ऐसे कंटेंट होते हैं जहां पे क्रैक सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं.
माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीजें अक्सर यूज की जाती है क्रैक कंटेंट में, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कमर्शियल मिलता हो, और ये ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर के अगर कोई कंटेंट डाउनलोड करते हैं, क्या पता वो कंटेंट बैकडोर हो, सो दैट इज आल्सो इंडिकेटर वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड मेजरली यही ऐसे कीजेंस और ऐसे हीडन फाइल्स, ऐसे क्रैक फाइल जनरली एक बैकडोर का काम करती है जो सिस्टम पे अक्सर आप ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कोई गेम है, गेम की क्रैक चीजें मैलिशियस हो सकती हैं। एंटीवायरस ये भी क्लेम करता है कि कभी-कभी कि यह कीजन ट्रोजन हॉर्स फाउंड किया गया सिस्टम पे, पर यूजर उसको अलाउ कर देता है। आपके अलाउ करने से आपके सिस्टम पे एक बैकडोर क्रिएट हो जाता है और इस बेसिकली रिमोट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर देता है उस हैकर के लिए बेसिकली जो दूर बैठा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं एसएमएस के माध्यम से भी, क्योंकि आज के परिवेश में आप देख सकते हैं कि मोबाइल पोर्टेबल डिवाइस काफी ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे आपके टैब आई टैब से कुछ भी हो, पर उस पे आए हुए मैसेजेस अक्सर ईमेल्स हो या कोई एसएमएस हो या कोई पर्टिकुलर यूआरएल्स हो, जैसा आप देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में। इसमें कुछ लिंक्स मैंने शो कर रखी हैं। ये लिंक्स मैलिशियस हैं, सस्पिशियस भी हैं, क्या पता ये लिंक फ्रॉड की ओर लिंक अप करने पर होता क्या है कि इस तरह की शॉर्टनिंग यूआरएल्स कभी-कभी उस कंटेंट को मोबाइल पे डाउनलोड करने के लिए कोशिश करती है। लाइक दे मे आस्क दैट you click that link and you download some softwares on your mobile, on your computer, even though then you can able to use these things. Sometimes these are linked with financial frauds. तो ये भी एक एंगल है बेसिकली जो एसएमएस के माध्यम से इनिशिएट किया जाता है। दूसरे प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं जैसे कोई कैंपेन है जिसको हमने स्टार्टिंग में कहा है नैरेटिव। कोई कैंपेन आता है, जैसे अभी 5G का काफी ज्यादा न्यूज़ आप सुन रहे हैं, तो 5G रिलेटेड काफी ज्यादा स्कैम्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, किए जा सकते भी हैं, जिसपे यह क्लेम किया जा सकता है कि 5G अपडेट कराने के लिए सिम पे ये कीजिए, 5G के लिए बेसिकली आप इस लिंक पे अपडेट कीजिए या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए या फिर ये प्लेटफॉर्म पे जाइए। क्या पता कोई वेबसाइट हो सकती हो, क्या नंबर हो सकता हो। सो दीस आर द थिंग्स। सो आप इस पे जो लिंक देख रहे हैं, इस तरह की लिंक्स कम से कम यूज की जाती है, जैसे ngrok है बेसिकली rebrand.ly, bitly.ws, इस तरह काफी शॉर्टनिंग यूआरएल्स है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म सही है, पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर जब कोई सर्विस मिसयूज या कोई मैलिशियस चीज क्रिएट की जाती है, तब जाकर के चीजें आगे अब्यूज की जाती है। सो दैट इज द थिंग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप जैसे इंडियन मैसेंजर्स, आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एप्लीकेशन कोविड के टाइम पे आपने नोटिस किया कि फिशिंग एक सबसे बड़ा इशू था। फिशिंग को देखते हुए ऑनलाइन मीटिंग्स की जाती थी, काफी मीटिंग्स होती थी, काफी सर्वर्स आई। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो लिंक्स हमें मिलती थी या जो लिंक हमारे पास है बेसिकली, क्या ये वाकई ट्रस्टवर्दी है? क्या ये कंटेंट मैलिशियस लिंक तो नहीं है? मैलिशियस मतलब क्या कोई इशू तो क्रिएट नहीं कर सकती किसी यूजर के लिए? जैसे आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे कि ईमेल दिए गए कवर्स इंस्टॉलेशन के लिए, सिमिलरली फिशिंग व्हाट्सएप के लिए गिव गेट योर न्यू कोरोना वायरस सब्सिडी ऑन दिस लिंक, सिमिलरली रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन ऑफ 18 प्लस के लिए, तो लिंक में कुछ एपीके डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो एपीके जैसे एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड मोबाइल के लिए यूज की जाती है, ये ओपन सोर्स होती है, लोग डाउनलोड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या परमिशन ली जा रही है। परमिशन के माध्यम से क्या पता आपके कॉन्टैक्ट्स आपके एसएमएस की परमिशन ले रहा हो और आपके एसएमएस की परमिशन लेने के बाद उनके पास एसएमएस का एक्सेस हो, और जो ओटीपी आपके एसएमएस के माध्यम से आ रहा है वो बेसिकली हैकर के पास डायरेक्टली पहुंच रहा हो। तो जो पहले की सिचुएशन हुआ करती थी कि बैंकर्स में या फ्रॉडस्टर्स लोग कॉल करके पूछते कि सर मैडम ओटीपी बताइए, क्या पता इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद वो आपका एसएमएस डायरेक्टली रीड कर सके और आपसे ओटीपी भी ना मांगे। तो ये चीजें काफी ज्यादा नोटिस में आई। तो दैट इज अ एग्जांपल फॉर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैसेजेस जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रिप्टो के लिए और किसी इन्वेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी फेक लिंक अमेज़न है या कोई भी ऐसे वेल नोन बड़े प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लिंक्स भेज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट कराने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लिंक्स आर देयर, मैसेजेस आर देयर, मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम +91 नंबर, वो नंबर भी +62 +256 जो ये फॉरेन नंबर्स जो वीआईपी नंबर्स या जो फेक नंबर्स यूज किए जाते हैं, इसके बाद भी यह नंबर के बाद यह फेक लिंक्स जहां पे आप देख सकते हैं कि एचटीटीपीएस में है। एचटीटीपीएस मतलब इसमें एसएसएल है और अक्सर ये कहा जाता है कि एचटीटीपीएस वेबसाइट सेफ होती है। तो पहला तो नॉर्मल व्यक्ति ये सोचता है कि एचटीटीपीएस वेबसाइट सेफ है, और दूसरा जो कंटेंट इस पे है strong7.com या ebay788.com, तो लोग सोचते हैं कि द कंटेंट एंड द वेबसाइट इज सेफ एंड सिक्योर and they do investment. So sometimes while doing investment, they may ask to install some package, to install some application. Sometimes they may say that यह application आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। क्या पता वो एप्लीकेशन माइनिंग करता हो, क्या पता वो एप्लीकेशन एक बैकडोर क्रिएट करता हो, किसी हैकर, किसी फ्रॉडस्टर, किसी थ्रेट एक्टर ने किसी एपीटी को इनिशिएट करने के लिए, लिंक करने के लिए। So these are the things which is the prime things जहां पे ये चीजें इनिशिएट होती हैं।
आगे बात करते हैं, ऐसे काफी फेक एप्लीकेशंस भी हैं, हमने कुछ एप्लीकेशंस शो किए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर को देखते हैं, इनकम टैक्स का देखते हैं, सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशन, these are the portals, these are the websites, generally they contain ads, like you can see WhatsApp messenger, number of downloads you can see, number of icons, तो icons green कलर का दिखना, जो डेवलपर है कोई और है, so these are the things which is important to know exactly are these applications are legit or not. Some fake applications just act as a spy, just act as a malicious thing which can be harm to users basically. It's not only application, it's from application to website, website to any campaign, and they are the breach, we are the basically a method or attack medium, attack surface where these things are happening, and never know exactly कि यह method कहाँ से हो रहा है, ये malicious application, malicious website, phishing series हमें कहाँ तक ले जा सकती है, तो कहीं कहीं ये financial fraud या आपका डेटा चोरी करना, ये बेसिकली इसके मेन कंसेप्ट होते हैं, और हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि हमारा डेटा लीक कैसे होगा, चोरी कैसे होगा, डेटा थेफ्ट कैसे होगा। तो पहला तो हमारी गलतियों से हुआ जो हमने जानबूझकर इन चीजों को इंस्टॉल किए। दूसरा, हैकिंग के माध्यम से आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके एप्लीकेशंस, आपके एपीआईज, आपके कोई भी यूटिलिटीज, विजेट्स, प्लगइन्स, किसी में भी वीकनेस वल्नरेबिलिटी हो सकती है। हैकर्स कोशिश करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके, उस पे एक्सेस ले करके, सीएनसी क्रिएट करके रिमोटली उन चीजों पे कंट्रोल करना, वेबसाइट पे शेल अपलोड करना, रूटिंग करना, एंड दैट इज द सिंपल प्रैक्टिस ऑफ द सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट we can see about the classic bot attacks, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का भी यूज किया जाता है इस तरह की चीजों को इनिशिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं फेक अकाउंट से मैसेजेस क्रिएट करना, इसके माध्यम से शॉर्टिंग यूआरएल से कंटेंट भेजना, ड्राइव बाय डाउनलोड जैसे कंटेंट से ऑटोमेट मैनुअल पे कोई अपडेट आकर के डाउनलोड हो रहा है, जैसे जावा अपडेट के लिए आप काफी सुने होंगे, एडोब अपडेट के लिए आपको ऐसे कंटेंट काफी मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे अक्सर देखा जाता है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका मिसयूज किया जा रहा है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि these platforms are not safe, but the content inside there that is not legit, that may be fake exactly, even though यह Facebook पे भी हो सकता है, यह WhatsApp पे भी हो सकता है, यह किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पे भी हो सकता है, पर क्वेश्चन यहाँ पे है कंटेंट को वेरीफाई करना is our understanding, our main motto. So that is the perspective of classic things. Moving ahead about the phishing attacks. So phishing is a major thing. Phishing malware के कुछ ऐसे पॉइंटर्स है कि अगर हम ओपन सोर्स के रिपोर्ट के साथ देखा जाए तो 90% से ज्यादा जो अटैक्स होते हैं कहीं कहीं उसका इनिशिएशन फिशिंग अटैक्स होता है। मतलब अगर आज मैं दिल्ली में हूं और मुझे अगर किसी को अटैक करना है तो मुझे एक मीडियम चाहिए, एंड दैट मीडियम इज इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से मैं उसे लिंक भेजूं, वो लिंक एक्चुअली फिशिंग लिंक कहलाता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस वेयर हाउ दे कनेक्ट फेक इनवॉइस स्कैम, जॉब ऑफर्स, पासवर्ड्स एक्सपायर और रिन्यू, सोशल मीडिया अनरीड मैसेजेस, ईमेल अकाउंट अपग्रेड स्कैम, advanced fee scam, Google Docs scam, PayPal, messages from HR scam. These are the things which is there. So sometimes what is happening? Maybe any hacker create a link and he uploads something on Google Drive, and उस Google Drive में कंटेंट के साथ कोई malicious एक एप्लीकेशन भी डाल दिया, तो यूजर ने कंटेंट डाउनलोड के अलावा malicious एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके it act as a backdoor. So sometimes it's very important to know exactly what we are downloading, from where we are downloading, and exactly if you download it, how use that thing in a sandbox or in a platform or like वो हमारे मेन सिस्टम को इम्पैक्ट न कर सके। So ऐसे काफी चीजें हैं जहाँ पे हम एक क्विक गो थ्रू में समझा कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे इस ईमेल में आप देखिए कि कहा गया चेंज पासवर्ड, ये एक हाइपर लिंक है। चेंज पासवर्ड ब्लू में दिख रहा है, बट व्हेन यू क्लिक दैट लिंक इट विल ओपन अ फेक वेबसाइट, एंड द वेबसाइट इज जस्ट लाइक यू कैन सी जैसे video 24 डॉट समथिंग ऑफ फिशिंग पेज ऑफ अ फेसबुक। ये दिख रहा है फेसबुक का पेज है, पर यूजर यूआरएल को चेक नहीं करता है। यूआरएल बेसिकली जो आपके ऊपर दिख रहा है video 24s डॉट समथिंग करके, एंड यूजुअली हैकर्स क्या करते हैं इस तरह के लिंक्स भेज करके मास लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे, नॉट टारगेटेड, एंड दे ट्राई टू टेक पासवर्ड्स। सो व्हेन यूजर एंटर देयर पासवर्ड इन दिस फील्ड, सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे साइलेंटली दे टेक ऑल द पासवर्ड, दैट इज कॉल्ड credential harvesting. So once they collect all the credentials of the users, and simply what is happening there, after some time they may leak this information on dark web. You remember exactly कि ऐसा कुछ डेटा लीक हुआ। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें इससे बचना है तो ये काउंटर मेजर्स में काफी चीजें फंडामेंटल पर्सपेक्टिव में, अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज किया तो शायद आप इससे बच सकते हैं। तो सम पैरामीटर्स आर देयर व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पॉपअप्स, दैट इज आल्सो द एग्जांपल। पॉपअप पे क्या होता है कि इस तरह के फेक एड्स भी आते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई कंटेंट स्टडी करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, तो एक वेबसाइट के साथ मल्टीपल वेबसाइट खुल जाती है, कुछ फेक होती है। आप
एक्चुअली सर्च कुछ और करना चाहते हो, कुछ और खुल जाता है, खुलते खुलते कहीं और पहुंच जाते हो और कुछ और डाउनलोड हो जाता है. So it's very important to know exactly what to download, what to click. If any pop-up will come, exactly we have to read, is that content exactly are linked with our content or not? So that is the one perspective. So now talking about some practical perspective of the phishing attack is like how we have to counter, how we have to study. One is very clear. कहा जाता है कि जैसे कोई डोमेन है, आप एग्जांपल समझिए कि amazon.com है या फिर diwali.com है या बैंक एग्जांपल लेते हैं, ICICI का. अब नीचे जो थर्ड तीन लाइन लिखी हुई है something.icici.bank.com and दूसरा है icici.something.com. अक्सर यह ध्यान रखना है कि अगर कोई कंटेंट, मान लीजिए जो नीचे लिखा हुआ है icici.something.com, अगर यह पेज खुलता है और आपको अगर ICICI का वेबसाइट दिखता है तो यूजुअली पीपल सोचते हैं कि यह बैंक ICICI का है, पर द डोमेन है बेसिकली something.com. अक्सर में ध्यान यह देना है कि .com, .org, .nic, .in, .xyz से पहले जो भी कंटेंट आता है दैट इज द डोमेन, देन बिफोर दैट इज सब डोमेन. सो हमें अगर कोई चीज agm.something.com दिख रही है, मतलब वो कंटेंट something.com है, तो हमें खास कर ध्यान देना है कि इस तरह के लिंक्स हमें क्लिक करना है, वेरीफाई करना है, नीचे अबाउट अस में, नीचे कॉन्टैक्ट अस में, नीचे जो पेजेस हैं प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है. भाई बच्चों, अबाउट द फेसबुक, अबाउट द वेबसाइट, मे बी द वेबसाइट में कुछ डॉपलगैंगलर या कोई स्मॉल स्लाइटली आप कह सकते हैं लुक अलाइक जैसे वेबसाइट्स कह सकते हैं. फेसबुक में यहाँ पे डबल की यूज किया गया है, फेसबुक में यहाँ पे 00 यूज किया गया है. समटाइम ऐसे वेबसाइट भी हो सकती है जहां पर फिशिंग लिंक के माध्यम से लोग ध्यान नहीं दे पाते. आजकल तो और भी आइडियल होमोग्राफिक अटैक्स हो चुके हैं जहां पे एग्जैक्टली चीजें वैसी दिखती हैं पर होता वो नहीं है. सो वी हैव टू वेरी एश्योर दैट व्हाट वी आर क्लिकिंग एंड एग्जैक्टली द वेबसाइट इज सेम और नॉट. और अगर हम थोड़े और बड़े पैमाने में देखते हैं तो इंटरनेशनल नेशनल पर्सपेक्टिव में भी ऐसे मैलवेयर्स इनिशिएट किए जाते हैं जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में यूज किए जाते हैं. आपने एवोटेड के बारे में सुना होगा, फाइल कोडर और भी बहुत सारे हैं. अभी रिसेंटली सोवा करके एक ऐसा एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे भी इनिशिएट हुआ है जहां पर इंडियन को टारगेट किया जा रहा है. इस तरह से काफी एडवाइजरीज भी निकाली गई. इस तरह के मैलिशियस स्पाईवेयर कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या मैलिशियस मोबाइल एप्लीकेशन जहां पर वो आपके मोबाइल पे कलेक्ट कर सकते हैं जो की स्ट्रोक्स हैं, आपकी कुकीज को कैप्चर कर सकते हैं, आपके बैककॉम्स मतलब आपके फ्रंट कैमरा के माध्यम से आपकी कैमरास के इमेजेस भी ले सकते हैं, आपके जेस्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं. सो दे कैन डू वेरियस थिंग्स व्हिच may harm for a financial perspective. That is again we have to aware exactly what is what. Now some pointers in terms of emerging malware threats perspective, things like initially we know about ransomware. बहुत लोग को cyber extortionware और ransomware में फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब ransomware की बात करते हैं, ransomware कोई ऐसा malicious malware basically जो ransom मांगता हो और इसके कुछ methods होते हैं basically. So ransomware अक्सर एक सीरियस कंसर्न है, एक ऐसा मैलवेयर कह सकते हैं जो अपने हेल्थ पे भी इंपैक्ट करता है. यह कुछ सीरियस कंसर्न के अनुसार कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे बैंकिंग सेक्टर से कोई भी सेक्टर हो, डिजिटल सेक्टर, स्टडी सेक्टर, पब्लिक एजुकेशन, एनी सेक्टर, क्रिटिकल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इवन दो जो लोग कॉलेजेस में हैं अपने थीसिस लिखते हैं, अपने कंटेंट देते हैं ऑनलाइन, या जो कंप्लीटली वेबसाइट से कंप्लीटली प्लेटफॉर्म जो यूज किए जाते हैं, दैट इज आल्सो a kind of where these attackers daily basis they're targeting, they're trying to attack vulnerabilities and they take the data, and even though they can initiate the this kind of practices. मेल ऐसा आता है, मेल पे क्लेम किया जाता है कुछ ऐसे कंटेंट है, मैक्रो इनेबल करने के लिए चीजें की जाती है. So these are the things which is there in terms of downloading and collecting those information. So macro इनेबल के लिए अगर चीज कही जाती है, maybe that content may contain some sort of ransomware. अगर कोई ईमेल आती है या क्लेम की जाती है कि हम आपके डिपार्टमेंट से हैं, मे बी एचआर है जो टैकी शायद ना हो, अगर उसको ऐसे मेल आते हैं उसने ईमेल क्लिक कर दिया, एचआर भी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मे बी दैट इज इंडिकेटेड पॉइंट. समटाइम वी हैव टू एश्योर दैट एग्जैक्टली द लिंक और द पीडीएफ फाइल or attachment which we are getting exactly are safe or not, whether we have to click on the same environment or not, because while clicking executing it will open in some browser. तो मे बी ब्राउज़र जो वल्नरेबिलिटी होगी उसके माध्यम से वो अटैक हो सकता है. मे बी इफ यू ओपन दैट पीडीएफ फाइल in Foxy Reader, Adobe Reader, if it is 0 day something like then even patch cannot help in this situation. So exactly we have to assure the content is coming from there rather opening something that document. Drive by download content, pornographic content, infected website, watering hole attack, काफी ऐसे अदर इंडिकेटर्स हैं जहां पर अक्सर ransomware जैसी चीजें इनिशिएट होती है. मतलब कोई ऐसा malware
आपके कंटेंट को एडिट कर देता है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगता है क्रिप्टो के माध्यम से। सो दैट इज अ सीरियस कंसर्न, जहां पे एनोनिमिटी मेंटेन रहती है हैकर की, आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि ये किस कंट्री, किस थ्रेट एक्टर से बिलोंग करता है। उसकी टीटीपी के माध्यम से ही सिर्फ एजम्पशन लगाया जा सकता है कि हाँ ये इस बेसिकली थ्रेड गैंग से, इस ईएस से या इस पर्टिकुलर लिंक से कनेक्टेड है। ब्रांड अब्यूज, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, सप्लाई चेन अटैक्स, वीपीएन पे वल्नरेबिलिटीज, आरडीपी अटैक करना, डेटा ब्रीच इनिशिएट करना, क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट पे अटैक करना, जहां पे अक्सर देखते हैं कि डेटा ब्रीच होते हैं जहां पे क्लाउड एनवायरनमेंट पे अटैक की जाती है, वो वल्नरेबल है। इसके अलावा एक्सपोज करना कंटेंट को, या कोड पॉइजनिंग जिसे कह सकते हैं, या फिर बेसिकली रिमोट कंटेंट, जैसे आजकल देख सकते हैं कि ऐसे थ्रेट्स हैं जहां पर ब्रिंग योर ऑन डिवाइस जैसी चीजें भी यूज की जाती हैं। क्या पता कंपनी ठीक है, यूजर ठीक है, बट जो डिवाइस यूज की जा रही है उसके माध्यम से उस डिवाइस पे वल्नरेबिलिटीज हो बेसिकली। Phishing, vishing, smishing, again, it's a serious concern. Until unless if you know how to counter those phishing attacks, that is a serious thing. Vishing, voice के माध्यम से अगर कोई अटैक की जाती है malicious level पे, that is also vishing, voice over kind of phishing thing. Smishing is like SMS के अनुसार, SMS पे आपको कोई मेल आता है, मैसेज आता है कि हाँ मैं, या फिर आपने ये सर्विस परचेज की, थैंक यू फॉर दिस, अपनी फोटोज या अपना सर्वे के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप लिंक क्लिक करते हैं, क्या पता लिंक सही भी हो, पर मैक्सिमम इस केस में स्पैम भी होते हैं, ऐसे केसेस में फेक लिंक्स भी आती है, फेक नंबर से भी आते हैं, तो दैट इज अ सीरियस अटैक इन टर्म्स ऑफ मैलवेयर पर्सपेक्टिव। हम बात करते हैं कुछ काउंटर मेजर्स की। तो पहले हमें यह समझना है कि अगर हम इस तरह के पॉइंटर्स ऐसे मैलवेयर से ये जान जाते हैं कि हमारे ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर मोबाइल के माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से, या फिर आप कहिए कि किसी वल्नरेबिलिटी मतलब कोई वीकनेस या कोई बग अगर होता है, उसको अटैक करने के माध्यम से अगर कोई सिस्टम पे एक बैकडोर क्रिएट करता है या फिर कंटेंट क्रिएट करता है, तो वह बेसिकली क्या है, एक रास्ता है उस हैकर्स के लिए, उस मैलिशियस अटैकर के लिए, जो उस कंटेंट को के माध्यम से आपके सेशन क्रिएट कर सकता है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे काफी सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर कोबाल्ट स्ट्राइक, मेटास्प्लॉइट, न्यूक्लियर, ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंशन के काम भी आते हैं वीए में, और अटैक करने के काम भी आते हैं। तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, यू नो एग्जैक्टली दीस malicious software which you downloaded accidentally onto your computer, on your device or mobile, maybe act as a backdoor. That is one. Using antivirus, point again, various countermeasures are ahead, but before that, if you think like, yes, I do have antivirus, is it safe? Again, I'm saying like that antivirus can help only where you have a predefined signatures, predefined that code of against that virus basically. अगर कोई 0 day है, अगर कोई ऐसा कंटेंट है बेसिकली जिसका अभी तक कोड नहीं आया है, ऐसी कोई सीवी है बेसिकली जो रिलीज ही ना हुई हो, तो उस केस में एंटीवायरस के पास या कोई भी ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास ऐसे सिग्नेचर्स नहीं होते, उस केस में वह वायरस, वह मैलवेयर बाईपास कर सकता है, आपके सिस्टम पे आ सकता है। सप्लाई चेन अटैक में भी चीजें देखी जाती हैं कि जिसको हम एएमसी देते हैं, जो हम सर्विसेज यूज करते हैं, क्या पता वो कंटेंट, क्या पता वह सप्लाई, वो सॉफ्टवेयर, आप देख सकते हैं जैसे सोलरविंड का वेल नोन एक फेमस अटैक हुआ था बेसिकली सप्लाई चेन को देखते हुए, मतलब सब चीज सही थी। ऐसे काफी चीजें होती हैं, हमें यह जानना है अपने इस सेशन के माध्यम से कि चीजें होती कैसे, हमने देखी कैसे होती है, पर एग्जैक्टली हमें प्रिवेंशन कैसे करनी है, दैट इज द थिंग व्हिच you are going to explain further. So like let's talk about the some points. Remember ये cyber security, cyber crime, cyber terrorism, cyber anything जो डिजिटल से लिंक है, ये सबसे कनेक्टेड है। जरूरी नहीं कि साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम से लिंक नहीं हो सकती, मतलब हर चीज कहीं कहीं से लिंक है। तो हमें कुछ टिप्स ध्यान देना फंडामेंटल लेवल पे, हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि इतने खतरनाक हैकर्स से हम कैसे बचें, बट फंडामेंटल लेवल पे आप चीजें इम्प्रोवाइज करते हैं या फिर इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर थिंग्स। सर थैंक यू दीपक। Basically we should learn one thing, so how to prevent the malware to coming into our domain. So for example, if you are opening a door and you are left, so that is a very clear way to come in for anyone. So we have to close those doors taking due measures. So as Deepak said, what we have learned, like what malware is and what are the methods. So you know right now the methods. So now the counter is like how to close those ways for not exploiting those methods. So these are the few I can say the guidelines that we can take care of, so that we can have a proximity for not getting into the malware. So for example, the first one is to use strong and complex passwords. So why we always say that you use a strong password?
So that is the only key for everything. If you have any double authentication password, so it will be a guideline, or you get a domain that one can enter in a one part, but the second part he cannot enter. So that's why we always recommend for using strong password with double authentication. So that password that should not be shared with anyone, and you may, like, this is the main fundamental principle for any financial frauds even. So if you are sharing one OTP, or if you are sharing an password, so there is a chance of getting any cybercrime attack. So that is the first part. Second, coming to your device. So how you secure your computers. So as Deepak said, not only the antivirus. See, I have installed an antivirus. After 1 year, it has expired. But the next part, I'm not going to renew it, or just I kept the antivirus inside it. So there is a loop. So that an exploiter can attack your system using those antivirus, because it is not an active in mode. So using that antivirus, he can come into your system. So you have to patch that also. Firewalls, solutions also, the same thing. So every solution has some expiry. So get renewed of those solutions, so that it can be that the malware cannot enter into those premises. Social media savvy, as I already discussed, in a social media, so you have a known and unknown persons also. So by getting into unknown media access, you cannot exploit those things which are genuine and which are not genuine. So if you say that unknown person has sent any email like phishing or something through your social media, if you accept it, or if you install that application in your system, so then that will be a way for a ransomware, for a malware attack. So be cautious in accessing the social media, and we always recommend that please don't share your details or any personal information on the social media. So that will act as against you itself. So that is the key, that not to share any personal information on the social media, so that you are not giving any chance to any unknown person to get inside. And the same with the mobile devices. So I will come to the practical aspect also. In the mobile devices also, we have a lot many settings options where we don't go into it exactly. But if we follow those tactics or those guidelines or the steps, so we can at least stop few malware attacks into our system. So mobile devices is also one of the key for a malware to get into it. And updating the latest operating system and application. So coming to the OS and the application, these are totally very important. Like if you say that OS we always say to update to a new operating system, or in the same of the application also we say to update it, because this the company or the application developer has left out some loopholes inside the application, then only he came out with an update. So that loophole may be taken by the fraudster to get into your system. So always update the operating system and applications even. Secure your wireless network. This is very common. We should have a secured code and secured passwords for your wireless connectivities. Protect your e-identity. As I said in the social media, your identity can be taken as an against to you. So that to protect your identity is your responsibility, and it should not be shared everywhere. Report such incidents. There are few government reporting portals are also there, and the companies that are providing the platform are also having this reporting mechanism. So you can use any of the reporting mechanism to report such type of malware attacks. So it will be a beneficial for the customer or for the company to come up with a new updates for that. And protect your data and take backup. This is always there. For example, if we say the ransomware attack. So in ransomware attack, what happens? They will ask for a ransom. Otherwise, your data will not be coming back. So in that cases, at least you have a backup, and to protect the data also, you have some other guidelines in that which can be protected, so that the malware cannot come inside it. Be careful while clicking on link. As Deepak said, we are the one that we are calling the malware inside. So without your permission, they can't come inside. So the main issue is like clicking. If you click any unauthorized source, or if you click any application to download in your mobile, so that there
you have a capability of getting a malware inside the system. So before clicking any link, see the genuinity of the link. We'll show the practical aspect also. So with how to see that the URL or the application is a genuine or not. The next slide, please. So as I said about the OS part and some other Chrome and other application regarding. So this is one Windows update system. So you get a notification that system is to be updated, because the backend the system, the OS companies also do a lot many research to get up on their patches to get filled. So these are the updates that to come to the notice. Please update all the OS and the application part also. Even if you see that your normal Google Chrome also, in that Google Chrome also you have a lot many updates. So regularly you should watch those updates so that it will be backup to your security purposes also. If I say the personal stuff like password protection or any other personal information that is to be shared in the domain. So if you see the Chrome or if you see any of the application that you are dealing with for the network connectivity, managing the passwords or you're sharing or saving those passwords into your system is one of the key where there is a possibility to get out of those your credentials also. So always see that not to save any password into your system. So maybe the cookies are there that can be taken out your credential information. On this slide, there is a third-party application installation. So if you enable that system unknown sources, so if you off that or on it, so that again it depends on you. See, are you authorizing any unknown third-party application to get installed in your system without your notice? So it is obviously no. We should know like what are the applications that are to be installed in my mobile or in my device. So always enable this unknown sources so that you will get a hint that this is a application that is getting installed to your device. So without this, that will be automatically installed. So you may not be knowing that one of the application is installed in the system. Maybe it may be a malicious too. So take care of this. And these are the open source websites where you can check whether your data has been come in the open source or not. For example, you say this have been BWNPD. So there you can check your email ID and you can see that whether your data has been breach has been taken or not. So this is one of the URLs that you can check out the breach. So to be very frank, like we are not promoting in any website first of all. Just an example, like you can check. There are various websites are there, but you can just enter your email ID and you can check like whether your email ID maybe came into some sort of breaches or not. So it can show the information. That is one thing here. Yes. Second, if you receive any link or if you receive any phishing mail or email or SMS, if you see there is a short code or a URL, so you can check that URL in this one of the open source platform, so that it will give you a link that this is a phishing email or this is a malicious email or the malicious link. So it will give you a hint that not to open that link. So at least this will act as a bridge for the malicious or the malware application to get into your system. So this is another. And there is a URL scan also. These also work on the same parameters. So these are the open source information which can give you a hint before you are installing any application into your system. Correct. So this like here the website called urscan.io. You can just enter a fake URL. Like suppose आपको कोई WhatsApp पे कोई link मिलता है, आप उस URL कॉपी कीजिए, उसको यहाँ पे डालिए, click on public scan, then you can check exactly is malicious or not. थोड़ा सा टेक्निकल है हल्का सा, चेक कर सकते हैं कंटेंट इंडिया का है बाहर का है या exactly क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. So that is the pointer even there. So basically, after listening to all the aspects of the malware, we come to a conclusion that the key or the effective key is the awareness. The effective awareness is the key. I mean, like you should know what type of malware methods that are existing in the system. So as Deepak said, we have looked after all the methods also. So at least you might be knowing that there are some open source information available on the internet, so that you can check priorly before installing any application or clicking any link. So if you face that you have installed it or there is a malicious activity that is going on the system or the mobile, you may report on the incident at 13, or you may report on the www.cybercrime.gov.in,
or you may call a national cybercrime helpline number, that is 1930, and you may visit the csk.gov.in, that is cyber swachhta key. So these are the other handy links or the content that to be taken care, and you should keep always, if there is any mishappening of this activity that we have discussed, the malware attacks have happened. So these will help you and guide you for remedy also. Exactly. So would like to add one thing here, like hackers need only one thing. Hackers को सिर्फ एक vulnerability चाहिए सिस्टम में घुसने के लिए, और एक जो कंपनी में कोई सीईओ या कोई कंपनी में कोई काम है उसको तो हर तरह से देखना है कि हमें बचना कहाँ से, मतलब हर तरीके से उसे हर तरह के पॉलिसी प्रोसीजर्स वीएपीटी, मतलब बग्स है कि नहीं है उसमें, इश्यूज है कि नहीं, सारा कुछ. बट हैकर्स बस यही चेक करता है कि कहीं एक लूप होल मिल जाए, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, जीरो डे पर्सपेक्टिव में, कोई वल्नरेबिलिटी पर्सपेक्टिव में. तो हमारा पहला पॉइंट यही है, हमें अपडेट रहना है, हमें मतलब अपने आप को अपडेट रखना है, साइबर टेक सेवी होना है. दूसरा, वेबसाइट की बात की जाए, कंटेंट की बात की जाए, क्या क्लिक करना है ये जानना बहुत जरूरी है, कहाँ से डाउनलोड करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्रैक सॉफ्टवेयर्स अवॉइड करना है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट यूज करना चाहें तो सैंडबॉक्स यूज कीजिए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स यूज कीजिए, VMware जैसी चीजें आप यूज कर सकते हैं, लिनक्स जैसी चीजें ओपन सोर्स यूज कीजिए, जहां पर अक्सर कोशिश कम रहती है अटैकर्स को अटैक करने की. विंडोज बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, दैट इज वन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप हर चीज प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, अपडेट करते हैं, एंटीवायरस अपडेट करते हैं, कंप्यूटर्स अपडेट करते हैं, आपकी ओएस अपडेट करते हैं, प्रॉपर्ली लिंक क्लिक करते हैं, प्रॉपर्ली चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं इन चीजों को अटैक में घुसने के लिए. आप कोई भी न्यूज़ पढ़िए, कोई भी कंटेंट देखिए, अगर आप स्टडी करेंगे कि हुआ कैसे, तो आप यही पाएंगे कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी थी, ये वीक था, ये जीरो डे था, या सिक्योरिटी पैच नहीं था, या कोई एम्प्लॉय की गलती से. सो दैट इज अ कंडीशन व्हिच इज देयर इन टर्म्स ऑफ दिस ऑल थिंग. सो लाइक जस्ट कंक्लूजन पर्सपेक्टिव, ये कुछ ईमेल्स हैं, आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, आप I4C में भी पिंग आउट कर सकते हैं, दिस वेबसाइट एज वेल. साइबर क्राइम अगर कुछ हो जाता है इन कंटेंट को देखते हुए, तो आप 1930 नंबर आप नोट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए भी. और बॉटनेट से बचने के लिए, मैलवेयर से बचने के लिए CSK जैसे वेबसाइट पे जाकर के जो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं या रिसोर्सेज आप उसको यूज कीजिए, दैट इज फॉर योर सेफर साइड. सो दैट इज फ्रॉम आवर साइड. आई होप maximum things we have been covered from this thing, and malware is again big domain, again day by day things are coming up, so we should be assured that what we are doing. So be smart and creative in cyber world, that is the point which we have to use. Thank you. Yeah, thank you for sharing all the important details regarding today's topic with all our viewers. We are still left by around 3 to 4 minutes in the conversation. We have few questions. If you allow me, we could take one or two. Sure. Yes. All right. So someone is asking us if a user is using their system for some work, maybe office work or any other sort of work. In that case, should a person be worried about malware or ransomware attacks when there is nothing wrong with their system at all? No, I understood like what you are saying. See, there is no worry for that, because until and unless you accept any of the methods what we were discussing here, like clicking any link or malicious link, then only we should get out of the malware attack. Otherwise, without any permission or your acceptance, the system is safe. But would like to add one more thing, like hence we know that the Android is open in nature. Maybe any vulnerability in any application, that is one. So maybe you not installed something, but with the help of some sort of weakness or unpatched thing, maybe any attacker tried to take advantage of that vulnerability, that is one point. But for assurance perspective, you may try to install some anti-privacy, anti-malware, anti-virus kind of things on your computer or on your mobile to verify or to assure that exactly maybe anything which may be flagged, जो बता सके कम से कम, क्या पता कोई ऐसा malicious APK फाइल हो, क्या पता वो एक बैकडोर पे काम कर रही थी. So that is a pointer. आप एक एंटीवायरस अगर वर्कआउट नहीं कर रहा, क्या दूसरे एंटीवायरस यूज करके भी चेक कर सकते हैं मल्टीपल टाइम पे, ताकि एश्योरिटी हो सके एग्जैक्टली कि क्या पता कंटेंट है कि नहीं. So that is a thing there. And it's always important to prevent before start curing it. We'll take one last question for the session. Sir, as you mentioned about fake news. So nowadays we have different resources, like abundance of information, bombarded with all sorts of links and information. So what is the best way to verify and validate the information before sharing it ahead? So we have given already few websites like Diwas can virus tool as well. So these are the things where you can verify, or not to verify, just to assure that maybe that content is malicious or not.
I'm not saying Virus Total or this platform is completely give assurance. Maybe it is a 0 day something like that. Then again, they will not work. So that is one thing. But the chances are there. You can say like this. Point number two, you can verify the content from various websites. You just copy the code, copy the keyword, copy the text, copy the news, and check on various websites like whether it is okay or not, and try to find these information or these news come from which agency. You try to link with that agency may give proper information. For example, if any 5G related things are coming, so 5G comes under what? You check with DOD, you check with TRI, so they give a proper information whether it stands or not. Rather than going with some different WhatsApp channel or any university or any XYZ platform where maybe the content could be fake. So things are there. All right. So thank you so much, sir, for answering the questions of our viewers, and I think by now you have received the answers of all the queries that are in the comment section. Still we are left by some questions. We'll try to take them in the upcoming sessions. But as of now, I would like to thank both the panelists, Mr. Kumar and Mr. Dwivedi, for being a part of this conversation and guiding all our viewers. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all the listeners. Thank you to all the viewers who have connected with NCERT for this particular conversation. Now it's time to wrap up this interactive session, but stay connected to NCERT as our upcoming session is Sahyog, guidance for mental well-being and psychosocial support for all the students and viewers watching our session, and our topic would be nurturing leadership skills in adolescence. So stay connected to NCERT and keep watching PM E Vidya channels. Namaskar.